स्टूडेंट्स, आज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का दूसरा सेशन है। आज हम लोग काम करेंगे सोलो मॉडल के ऊपर एंड सम अदर डेवलपमेंट मॉडल्स एज वेल। पहले रॉबर्ट सोलो ने ये मॉडल दिया था 1956 में, नोबेल प्राइज मिला था उनको 1987 में। सोलो ग्रोथ मॉडल में मेन क्या है, उसी के ऊपर काम करेंगे कि कंट्रीज को अपने हिसाब से काम करते। व्हाट इज दिस मॉडल? मॉडल्स आर मैप्स, ओके। सो टिपिकली बाय दिस यू कैन get some old data, utilize and cross-check with respect to the present and predict the future. This is the model. So anytime, whenever we are working with any model, so basic structure is this. So setup kya hai? Inputs like labor and machines are produced and output like automobiles are produced. Output can be intangible, think of haircuts and theater performances. Input mein kya hai? Labor, capital, and output is y. Y is a function of k and l. Cope-Douglas के हिसाब से alpha and alpha plus 1 minus alpha. Sum of the parts are 1. Unity. Next, constant returns to scale है. So k and l alpha both are linearly related to each other. If both changes by 2 times, so the outcome will also change by 2 times. दो और भी होता है IRS और DRS. जब ये more than 2 times change होगा तब IRS and less than 2 times तो DRS. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वेजेस एंड रेंटल प्राइसेस के ऊपर लिया जाता है WL एंड RK. W इक्वल टू है वेज, सो W इंटू नंबर ऑफ लेबरर्स, तो लेबर को कितना पैसा दिया, R कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, सो R इंटू के जब मशीनरी खरीदते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या आएगा, F of K, L, WL minus RK. This is the profit and that's the cost part given. So first order condition क्या है, marginal product of labor is equal to wage, MPL equal to wage. So यही दिखाया गया 1 minus alpha y by L. Marginal product of capital is equal to the rental price, MPK equal to R. So WL plus RK 1 minus alpha of this thing. So this is a valid relationship. Share of the output to the labor of this constant. So WL by Y is 1 minus alpha, WK by Y. So this is itself comes as a question in the examination. आगे बढ़ते, सोलो मॉडल इन पार वर्कर टर्म्स में अगर देंगे, सो इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स इन द पार वर्कर टर्म्स में हम लोग करेंगे. सो आउटपुट पर वर्कर और कैपिटल पर y इक्वल टू y बाई एल एंड k इक्वल टू k बाई एल. अगर इसी सिस्टम को रीराइट करेंगे इस फंक्शन को, सो y इक्वल टू k टू द पावर अल्फा एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा, सो y बाई एल इक्वल टू दिस टू, सो y इक्वल टू ओनली k टू द पावर अल्फा. ओके, जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेशन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी रहता है. सो मोड ऑफ द कैपिटल, सो ये देखिए अगर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो ये फंक्शन एक अपर स्लोपिंग ग्राफ देता है जो कि कॉनकेव है. कैपिटल एक्यूमुलेशन के हिसाब से अगर करेंगे, सो समय के साथ साथ कैपिटल का डेप्रिसिएशन भी होता है. ये है डेप्रिसिएशन. ओवर टाइम कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या है कि ऑफ दिस थिंग 2014 एस इनटू सिग्मा के यहाँ पर माइनस होगा. सो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, alternatively del k with respect to time is k dot. Next, population and labor force. So LT equal to L0 e to the power NT. So population भी with respect to time increases, labor force growth rate को हम लोग इस फंक्शन के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं. So ये क्या है, L0 n into e to the power minus t, L0 e to the power NT. So this is equal to only n. So समय के साथ साथ जो L का चेंजेस हुआ है तो हम लोग उसी को ही ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन कहेंगे. कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इन पार कैपिटा टर्म्स में कैसे आएगा, k इक्वल टू k बाई एल, लॉग के ले लेंगे, लॉग के माइनस लॉग एल, डी डी एल ऑफ लॉग के इक्वल टू डी डी टी ऑफ लॉग के माइनस लॉग एल. पार कैपिटा के हिसाब से डी डी टी ऑफ लॉग के डॉट बाई के. सो दीज टू फंक्शंस आर हियर. सो कलेक्ट द टर्म्स एंड रीअरेंज करने के बाद ये हम लोग का मेन इक्वेशन आएगा, सिग्मा प्लस एन डेप्रिसिएशन प्लस पॉपुलेशन चेंज. ये सोलो मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इन पार कैपिटा टर्म्स में जो है, द चेंज ऑफ द पार कैपिटल पर वर्कर ईच पीरियड इज डिटरमाइंड बाय 3 टर्म्स. एक है इन्वेस्टमेंट पर वर्कर कितना हो रहा है एज कैपिटल वर्कर चेंज होता है. दूसरा डेप्रिसिएशन पर वर्कर कितना डिक्रीज होता है अगर कैपिटल बढ़ता है. और इवन देयर आर नो इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, कैपिटल पर वर्कर उसके बाद भी घटेगा क्योंकि द अमाउंट ऑफ एन के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनहैंसमेंट एंड एन ऑफ द वर्कर्स, सो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. ओके, बेसिक सोलो मॉडल को हम लोग सॉल्व करने के लिए एनाटॉमी ऑफ द मॉडल को समझना पड़ेगा. सेवरल
equations describe the relationship between endogenous and exogenous variables. Endogenous means जो सिस्टम के अंदर डिराइंड होते हैं, एक्सोजेनस जो सिस्टम के बाहर. पॉपुलेशन ग्रोथ और डेप्रिसिएशन हमारे हाथ पे नहीं है. प्रोडक्शन फंक्शन में क्या इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके का कैपिटल आएगा ये हमारे हाथ में जरूर है. ओके. अच्छा, सॉल्विंग द बेसिक मॉडल में हम लोग का जो आएगा क्यों कर रहे हैं. सॉल्विंग द मॉडल मीन्स टू एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल दोनों का कैलकुलेशन करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर आइडियोलॉजी. सो इक्वेशन ऑफ द मॉडल क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरीके से, लेट मी जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट. ये हो गया. सो y इक्वल टू k टू द पावर अल्फा, k डॉट इक्वल टू sy माइनस n प्लस k. सो दिस इज द कैपिटल accumulation and this is the production function. Okay. Now basic model का ये structure, this is a very important and this is the intersection point. यहाँ पर k star and k0 are the two important values. Okay, and this intersection point is very important. Again, I'm showing it here. The capital deepening occurs when the amount of per capita worker increases, and capital widening occurs when the amount of per capita worker stays the same. So you have a little bit steeper line than the before, and this is the capital deepening and this is the capital widening point. Okay, next में चलेंगे. Converges to the steady state. Steady state पे convergent होता है. So this is the steady state situation. 1n plus sigma into k is equal to s of y. Okay. So k dot equal to 0. यहाँ पर investment is equal to the amount of k increase. The rate at which the change of k is 0 and the capital per capita stays forever at k star. So that's why it is called a steady state. अब डिक्रीजिंग k की तरफ बढ़ेंगे. The basic Solow diagram में हम लोगों का जो पैटर्न दिया हुआ है. The economy starts off with the level k1 and such that the investment is not enough to make up for the decreases in k due to the अगर depreciation और population growth की वजह से हुआ. So over the time ये equilibrium point अपने हिसाब से shifting करता है. So this is from less to high, this is from high to less situation. So this is the dynamic mechanism in real life with respect to the k changes. Solow diagram with production function अगर लेंगे, ये हम लोग का production function हो गया sy with this. So production function ऊपर में है. So this is the amount of extra consumption which you are having. Comparative statistics में हम लोग देख सकते हैं recalling and seeing the pattern and normal situation में क्या होता है ये, और आउटपुट और कैपिटल स्टॉक पर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब एक चेंजेस होता है तो दूसरे में क्या चेंजेस आएगा. सो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, एस से एस डैश वाई हो गया. सो के ग्रोस अंटिल इट रीचेस टू के डबल स्टार. तो ये बढ़ता रहेगा. सो अपलिफ्टमेंट ऑफ द and this are becoming a steeper line. So sy line will become steeper. So a steeper, so rise means in general याद रखिएगा steeper होगा line और fall means flatter. याद रखना आसान है FF. Okay, comparative study increase in the population growth rate. ये लाइन यहाँ पर में स्टीपर होगा लेकिन ये पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने की वजह से the ultimately growth of the economy falls down and per capita k by y k by l this thing will also fall as l increases keeping the k fixed. So we are seeing this relatively regress situation. स्टेडी स्टेट एक्सप्लिसिट सोल्यूशन में भी हम लोग जा सकते हैं. अगर k डॉट को लेंगे, चेंज इन k इज इक्वल टू s ऑफ k टू द पावर अल्फा n प्लस सिग्मा इनटू k. बाय डेफिनेशन ऑफ द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर doesn't change in the steady state, that is k dot equal to 0. Substituting k dot equal to 0 into the capital accumulation equation results the following: k dot equal to 0 equal to s of k minus n plus sigma into k. So k star is s by n plus sigma by 1 minus 1 और y star equal to this. ये जो वैल्यू हम लोग का आ गया इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे. why are so rich and they are so poor. okay, और ऐसे से उल्टा भी बोल सकते हैं why some people are rich, some are so rich and some are so poor. so ये क्यों होता है. स्टेडी स्टेट का ये जो वैल्यू है, द रिचर कंट्रीज हैव हायर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट, लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लोअर कैपिटल एक्यूमुलेशन रेट एज वेल. ओके, एंड डेप्रिसिएशन रेट भी उतना कम होता है. सो इसका थोड़ा सा एक डायग्राम मैंने
दिखाने का कोशिश किया है different country wise. US you can see at a relatively higher position, and this is Hungary, this is Chile, and this is Pakistan. India is also in this lower zone. This is Japan, this is Korea, this is Chile, Finland, Czech Republic, Italy, France. So they are in this top zone. So if we just split it into zone wise, okay, so zone 1, zone 2, zone 3. So 3 are the strongest zone. India obviously falls in the zone 1, unfortunately. And GDP per worker versus investment rate में भी आप लोग इस तरीके का diagram दे सकते हैं. This is just for an idea how the thing, and countries with the high population growth rate tend to be poorer. Okay, so yeah, again in this way we can see it here. Mostly the sectors are into 1 and 2 sectors now. Okay, so GDP per worker versus population growth rate, not a very good indicator in many of the situations. So let's skip this. Next, growth. What is growth? ये growth होता क्या है? So transition dynamics के हिसाब से k dot equal to 0. So means n plus sigma, this is the constant over time. And this is the situation of k dot. So we do not grow at the steady state. So zero growth in basic Solow model क्या होता है? So when growth is possible in the basic Solow model if the capital per worker is not equal to its steady state level. So rearranging the accumulation function में हम लोग लिख सकते हैं k dot by k equal to s of k this thing minus n plus sigma. अब ट्रांजिशन डायनेमिक्स को अगर बेसिक मॉडल के थ्रू हम लोग लिखेंगे, ये आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा. दिस इज द APC एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड के विल चेंज फास्टर. तो ये देखिए, अगर इसी लाइन को मैं अगर थोड़ा सा ऐसा कर दूं, ओके, सो यू कैन सी द चेंज इन हियर. या so by basic changes in these two lines you can create a different kind of movability as well. Okay, technology and the Solow model and technological progress को अगर हम लोग लेंगे, so technological progress is equal to AL, the basic model labor with AL. A is the level of technological development. So higher the technological development, better will be the production. So exogeneity of the technology के हिसाब से A dot by A equal to G A to E0 e to the power GT. Balance growth path में हम लोग आएगा production function as per capita in the technology is Y equal to K to the power alpha into A to the power 1 minus alpha. रीराइटिंग को हम लोग ऐसे इस तरीके से इस पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बैलेंस ग्रोथ मॉडल को हम लोग इस पूरे पैटर्न के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं. In the next video we will discuss more about the growth models. That's it for today.